Okay, I hope you have done the previous concept. You know about the tree terminologies, and that is very important. And the second is very important part, types of the binary tree, right? So, fo- so you are starting with the binary tree and then types of the binary tree. The second piece is very important. You need to note down. So let's understand what is the binary tree. A tree with at least or must have the two children. Binary means two, right? So 4 and 6. So binary, huh? Uh, Now the types of BT are the binary tree. We are going to understand this in a detail. So how many types are there? Let's understand this. So first type of the binary tree. So binary means true. So दो children होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है. Binary tree. So full binary tree. Let's understand the first type of the binary tree. Full binary tree. So what is a full binary tree? If each node of the binary tree has a zero or the two children, but not one, is called the full binary tree. एक ऐसा ट्री जिसका या तो दो चिल्ड्रन हो, या तो दो चिल्ड्रन हो, और या तो जीरो चिल्ड्रन हो, तो ऐसे ट्री को हम जो है फुल बाइनरी ट्री कहते हैं. N4 N6 ऑल इन 5. चले चेक करते हैं. जीरो और टू चिल्ड्रन. दिस इज द कंडीशन. This is the condition. Zero or two children for the full binary tree. Let's check from the one by one. A root node has two children. Fine. Meaning N1 has a two children. N2 has a two children. N3 has zero children. N4 definitely zero children. N6 has zero children. So if this node has one children, this cannot be the full binary tree because N3 is the one children. But for full binary tree, हमेशा ये याद रखना कि हर नोड के कोई भी नोड हो, या तो उसका जीरो चिल्ड्रन हो या टू चिल्ड्रन हो, और वन की कंडीशन फुल बाइनरी ट्री के अंदर नहीं आएगी. दिस इज, now you can define this, maybe you can note down, such type of the tree is called full binary. Again, this is a full binary because this has the two children and all of the nodes with the zero children. This is called full binary tree. The example of full binary tree, zero children or two children. Clear? Let's move toward the next tree type. Next type is perfect binary tree. All nodes have two children and they are at the same depth or the same level. All nodes, two children, they are at the same depth and the same level. This is again the important concepts of the perfect binary tree. So let's understand by example. The second type of the tree is called perfect binary tree. So what is this perfect binary tree? So all children, all nodes have two children, one,
2, node 1, 2 children, node 2 के भी 2 children, node 3 के भी 2 children। एक तो ये कंडीशन हो गई कि हर नोड के 2 चिल्ड्रन हों परफेक्ट बाइनरी ट्री में। नोड 1 के 2 चिल्ड्रन 2 and 3, नोड 2 के 2 चिल्ड्रन 4 and 5, नोड 3 के 2 चिल्ड्रन 6 and 7। The second condition that was same level, लेवल किसको कहते हैं? ट्री के अंदर ये ट्री की लेवल्स कहलाती है। लेवल 1, लेवल 2, ये लेवल कहलाती है, राइट? लेवल 1, ट्री की लेवल 2, and this is level 3. So for perfect binary tree, every node should have 2 children and they are at same level. So check करें, नोड ले 1 के 2 चिल्ड्रन दोनों सेम लेवल पे हैं, नोड 2 के 2 चिल्ड्रन और नोड 3 के जो है वो लेवल चेक करें तो सबकी लेवल जो है सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ से हर नोड की लेवल सेम हो, अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें तो अब ये देखें लेवल सेम नहीं है। दूसरी बात, इसके चिल्ड्रन जो है वो 2 नहीं है, 1 है, ठीक है ना? हर नोड के 2 चिल्ड्रन और सेम लेवल। अब अगर इसको ऐसे कर दें तो भी लेवल सेम नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस चिल्ड्रन ऑफ दिस, इनकी भी लेवल जो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब हर नोड के 2 चिल्ड्रन और दे आर एट सेम लेवल, राइट? सेम लेवल होना भी मैंडेटरी है for the condition of the perfect binary tree. So this is the one of the example for the perfect binary tree, that the condition 1, each node has 2 children, and second condition, they are at the same level or the same depth, right? So if you can see, they are at the same level or the same depth, right? Same depth means that the distance from the root to the node should be the same. This is again the third concept in point of view for the depth. Same depth meaning that अगर node 4 का distance देखें root से, this is the root node, from root to node 4 distance is 2. node 5 का अगर distance देखें वो भी 2, node 6 का देखें वो भी 2, node 7 का भी 2. So all depth, the depth of all these nodes is the same or equal. So that's why this tree is called perfect binary tree. Summary, perfect binary tree एक ऐसा ट्री है जिसमें हर नोड के 2 चिल्ड्रन हैं, सबकी लेवल बराबर है और इन सब की डेप्थ जो है वो इक्वल है। यानी लेवल के अंदर जितने भी नोड्स आ रही हैं उनकी अगर आप डेप्थ चेक करेंगे सेम है। नोड 2 की डेप्थ 1, नोड 3 की भी डेप्थ 1। इस लेवल में जितनी भी नोड्स हैं उनकी डेप्थ जो है वो सेम है। डेप्थ 4 नोड की डेप्थ भी 2 है, 5 की भी 2 है, 6 की भी 2 है और 7 की भी 2 है। अगर इन कंडीशंस को कोई ट्री सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे दैट इज परफेक्ट बाइनरी ट्री। This is the second type of the binary tree that you saw with example. The third type of the binary tree is called a complete binary tree.
A complete binary tree is a binary tree in which all levels are completely filled except possibly the lowest one, which is filled from the left. All levels are completely filled. Third is uh, the third is complete binary tree. Complete binary tree. The important points, all levels are completely filled. This is the first thing. All levels are completely filled except the left one. Right? इसको समझते हैं. One, node 1 has a 2 children. 3, this has a 2 children, for example. 4 and 5, this has 2 children. 6 and 7, this has 2 children. 7 and 8. So let's about the labels first. Level 1, level 2, level 3, level 4. So all levels are completely filled. Level 1, level 2 is a filled, completely filled means left, right, both sides, children is available. Level 3 is also completely filled because 2K, 2K, 2 children, 3K, sorry, 2 children, तो ये भी completely filled है. लेकिन ये completely filled नहीं है क्योंकि इसके भी 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, इसके भी तो completely fill हो जाएगा अगर हम ऐसे करें तो ये completely fill हो जाएगा. But we are not filling these children's. Let me have some water. गला खुश्क हो रहा है, मैं थोड़ा सा सिर्फ पानी पी लूं. So okay, so because there is an exception, हमें exception है कि अगर ट्री की जो लेफ्ट नोड है पूरे ट्री में यहाँ से अगर शुरू करें तो दिस इज अ लेफ्ट, ये लेफ्ट नोड है. अगर इसके 2 चिल्ड्रन मजीद हैं और आगे लेवल्ड फील्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है. तो इस एक्सेप्शन की वजह से यहाँ पे इसके 2 चिल्ड्रन हैं, बाकी जितनी भी लेवल्स हैं they are completely filled. Right? So this is called the complete binary tree. So all levels are completely filled except the left one. So this is the concept for complete binary tree. The second is, the fourth one is called balanced binary tree. Balanced, a leaf or all leaf nodes are located at the same level or distance from the root node. Balanced binary tree की ये condition है कि उसकी जितनी भी leaf nodes हों, right, जितनी भी leaf node हो उनका root से distance बराबर हो. So this is the fourth type of the binary tree, is called balanced binary tree. बैलेंस बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसका जितनी भी लीफ नोड्स हों उनका रूट से डिस्टेंस बराबर हो. यहाँ जरूरी नहीं कि हर नोड के 2 चिल्ड्रन हो. मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 for example, then 11. अब इसकी लीफ नोट्स कितनी है? लीफ नोट, लीफ नोट, लीफ नोट एंड लीफ नोट. लीफ नोट 1, leaf node 2, leaf node 3, leaf node 4. So let's calculate the distance of each leaf node. L1 का leaf node, leaf 1 का distance root से 1, 2, 3, 1, 1, 1 is 3. Leaf 2 का distance भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. So leaf 3 का distance, that is 9 or 10 maybe, 1, 2, 3. And similarly, leaf 4 का distance 1, 2, 3. So the idea is a balanced binary tree, type of the tree whose leaf nodes, the leaf nodes, all leaf nodes has the same distance, are at same distance from the root node. रूट नोड से अगर लीफ नोड सबका डिस्टेंस सेम हो तो उसको जो है वो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहा जाएगा, राइट? लीफ नोड से डिस्टेंस सेम हो. थोड़ा सा अगर इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे देख लें. n1 के 2 चिल्ड्रन हैं, n2 n3 n2 के 2 चिल्ड्रन हैं, n4 n5 और n1 का एक चिल्ड्रन है. लेकिन जितने भी लीफ हैं n4 n5 n7, they are at same distance from the root. 1, 2, n5 भी 1, 2, n6 भी 1, n7 भी 1 and 2. So सेम डिस्टेंस पे हैं सारे फ्रॉम द रूट नोड. लेकिन यहाँ अब कोई कंडीशन नहीं है कि भाई इसका चिल्ड्रन 2 हो, 1 हो या 0 हो. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. तो इसके चिल्ड्रन जो है 2 भी हो सकते हैं, इसका 1 हो सकता है, इसके भी 2 हो सकते हैं. सो दैट डजंट मैटर in the balanced binary tree, but in a balanced binary tree, the distance from the root to the all leaf nodes should be same. This is the fourth type of the balanced binary tree. I hope you got this concept. So this is a binary tree and types of the binary tree, right? So balanced binary tree we have covered. Sorry. So this is a balanced binary tree. And similarly, the representation of the binary tree in a linked list. So linked list के अंदर भी इस tree की जो है वो linked list की form में भी tree structure को लिखा जा सकता है. You know the linked list data structure, the node and address and a reference. So similarly, drinks की the hot and cold, and hot के अंदर जो है वो tea है, for example. Coffee hai, and then calling hai, then Fanta hai, Cola and Fanta. So this is just an example representation of the binary tree, the linked list form. So this was the tree data structure. So the summary of the questions, you can note down what we have studied so far in the tree data structure. We studied about tree data structure. Then second is why do we need it? ये भी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा.
हमने कहा कि the tree data structure is quick and easier. एग्जाम्पल के साथ समझा कि इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं. We understand about its hierarchical relationships. Then we discussed the terminologies of tree data structure, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस की. आपको प्रैक्टिस स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल दिया, आपने सारी टर्मिनोलॉजीज और ट्री को बताया. Then on 5th I discussed the binary tree along with its 4 types of the binary tree, right? हमने जो है वो 1, 2, 3 and 4, जिसमें हमने कहा full binary tree. If you have skipped then I will upload the tutorial, right? वहाँ से concept full binary tree. Then you have perfect binary tree. Then you have complete binary tree, and then you have balanced binary tree, right? Wonderful. So this is the if you say this is the summary of the lecture, right? Summary of the lecture is, so you cover the tree data structure, why do we need it, and second also you discuss about the application, कहाँ हम जो है वो use करते हैं, application of the tree, right? Like I gave you a few examples for file and folder system, because we need it because it's a quick and easy. Terminology we discuss, and you have one example for practice. Then we discuss about the binary tree. In binary tree, we discuss about the full binary tree, perfect binary tree, complete binary tree, and the balanced binary tree. Clear? So this is the summary of the tree data structure. Now I'm giving you one assignment for the binary tree. You complete it, right? So let's move toward the assignment and see what we have in the assignment. So an assignment, even I would say it's better you have practice. So practice 2 is a practice 2 example. So what you can do is create a binary tree of strings. अब मैं numbers नहीं, अब मैं strings का आपने एक binary tree बनाना. Create the binary tree of strings for following types. With the minimum size, meaning that number of nodes जो भी आप ट्री बनाएंगे, number of nodes, the minimum size of number of node is 10. कोई भी ट्री होगा फॉलोइंग टाइप्स के लिए स्ट्रिंग्स का होगा, लेकिन कम से कम उसकी साइज जो है वो 10 होगी. So you will create strings data type in the tree, and first will be your full binary tree. The second you will create for example, complete binary tree. The third example you will create is a balanced binary tree. So full binary tree,
then you have a complete binary tree, then you have a perfect binary tree. Clear? So this is a practice 2. You have to create binary tree of the strings. There may be any strings. Size minimum 10 नोड होनी चाहिए ट्री के अंदर, maybe 11, 12, 13, 14, whatsoever. You have to create these types of the binary trees for practice purpose so that you understand the concept. अगर ये चीज आपको इसमें कोई confusion है, कोई भी चीज समझ ना आए, just go back toward the recorded lecture. उसको दोबारा देखें, चारों बाइनरी ट्री के जो टाइप्स हैं उनके एग्जांपल्स को देखें, और फिर आप वापस आके इस असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व करें फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ताकि द ट्री डेटा स्ट्रक्चर, द बाइनरी ट्री, types of the binary tree data structure along with applications, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं. ठीक है, इसको कीजिएगा and I will be sharing the recorded lecture. So let me stop first, then I come back.